जैसे हमने कल कहा था, बहुत समझदारी का भारतीय रिएक्शन था। हमने केवल उन जगहों पे हमला किया जहां आतंकी गतिविधियां होती रही हैं, आज हो रही हैं या कल होंगी। उनके ठिकाने सबको पता था, कहाँ कहाँ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के घर, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं, सामान्य सबको पता कि इन शहरों में उन पर हमला किया गया। और कल आप देखिए भी अजहर मसूद ने आके कहा कि मेरे साथी मारे गए, तो वो तो एक तरीके से माना जाए तो लीडर है ना टेररिस्ट का पूरे उसमें। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिन टारगेट्स पे हमने हमला किया उनका सीधे सीधे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर से कनेक्शन है। दूसरा, जहां पाकिस्तान का भी क्या करेगा पाकिस्तान, इतनी उसमें हिम्मत तो है नहीं कि कोई हमला बोल दे। अगर होगा तो फिर तो उसका जो हाल होना है वो बहुत कम होगा, मतलब शायद रूस जितने टुकड़ों में नहीं टूटा उतने टुकड़ों में शायद पाकिस्तान टूट जाए। तो वो एक हिंदी में कहावत है ना, मैं हल्की बात नहीं कहना चाहता, बट खिसियानी बिल्ली तो खंबा नोचेगी। तो यही सब करते हैं और उनमें कोई मानवता मानवीयता नहीं है उनकी फ़ौज में। माफ़ करिए, कहना नहीं चाहिए, भाई जाहिलों की फ़ौज है भाई। तो उनका ये कि ठीक है, सिविलियंस को मार दो, इनको मार दो, उनको मार दो, बम फेंको, और अपने यहाँ बताएंगे ये मर गए वो मर गए, बहादुरी कैसे से बन के घूमेंगे। आप देखिए ना, चाहे पहलगाम में हमला हो निहत्थों को मारा, चाहे यहाँ हमला हो निहत्थों को मारा। तो निहत्थों को मारना तो दुनिया की सबसे बड़ी कायरता होती है। तो यही दिखा रहा है पाकिस्तान, उसका और क्या कर सकते हैं। मुझे कल से थोड़ा इससे कि दिल ज़रूर इसमें दुखा है, जो हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हुए हैं, और मैं उनके प्रति अपनी और पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं। लेकिन जो मैंने कल देखा कि जैसे अमृतसर के डीएम का बयान आया, पंजाब के लोगों का आया, जब उमर अब्दुल्ला जी ने मीटिंग रखी कि हमारी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन पुलिस, फौज सब मिलकर अब बॉर्डर को और सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। ज़रूरत पड़े तो लोगों को सेफ जगहों पे लगाने की ज़रूरत पड़ी। कम से कम जब तक ये स्थिति बनी रहे, हमारा पहला वहाँ ड्यूटी होनी चाहिए। फौज मुस्तैदी से बॉर्डर संभालेगी कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य जनता को और संभाले हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को पूरी की पूरी सेफ्टी दे। सर, भारत ने राजनीतिक कदम भी उठाया है। तमाम राजनायक हैं, राजदूत हैं भारत में, तकरीबन 13 देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको जो है इससे अवगत कराया, बताया कि क्या कुछ भारत ने स्टेप लिया है और किन परिस्थितियों में लिया है, उनको ब्रीफ भी किया है। एक उस फ्रंट पे भी लड़ाई सरकार नहीं, वो अच्छा है। देखो ना, हमने क्या किया, हमने उन जगहों पे हमला किया जहाँ से टेररिज्म निकलता था। हमने कोई उनके मिलिट्री टारगेट्स नहीं देखे, कोई उनका और टारगेट नहीं पकड़ा। ये सारे के सारे नोन टारगेट है। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ तो जो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, काफ़ी हद तक वो भी जानती होंगी, क्योंकि अमेरिका है, वेस्ट है, वो भी ये मानता है कि पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करता है। उनकी भी आंखें टेरर पर गड़ी होंगी। ये कोई ऐसी तो है नहीं कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रिश्तों की चिंता करते थे तो वहीं के टेरर कैंप्स देखते थे। उनको भी पूरा ज्ञान होगा पूरे कश्मीर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय देशों को तो पहले ही पता चल गया होगा कि हमने बहुत संभल के, बड़े कंट्रोल करके जो है टारगेट चुने हैं, और जो टारगेट चुने हैं वो बहुत सही टारगेट चुने हैं। सर, कैसे देखते हैं आप सर, ऑल पार्टी मीटिंग आज बुलाई गई है जहां पर जो है सभी पार्टियों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस की डिमांड ये भी है कि प्रधानमंत्री रहें तो बेहतर रहेगा। देखिए, मीटिंग अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री को होना चाहिए। विपदा के समय, राष्ट्रीय मसलों के समय प्रधानमंत्री हमारा नेता होता है। बार बार भारतीय जनता पार्टी भी तो कहती है ना। तो नेता को तो सब एक तरीके से इसमें नेतृत्व दिखाना चाहिए। भले प्रधानमंत्री ब्रीफिंग ना करें, रक्षा मंत्री करें या जो भी अधिकारी करते हैं करें। ये ज़रूरी थोड़ी होता है कि जो एक तरीके से आकर मुखिया की तरह किसी मीटिंग में बैठता है वही सारी ब्रीफिंग करे। लेकिन प्रधानमंत्री का होना उसमें बहुत आवश्यक होता है। मुझे लगता है ये बात प्रधानमंत्री ठीक नहीं करे। क्यों नहीं कर रहे वो जाने, इस समय कोई सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन एक सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री को आना चाहिए। देखिए, देश और देश की रक्षा सुरक्षा जितना सरकारी पक्ष का है उतना ही विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये हमारी सरकार है, हमारी सेना है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है, और इसमें हमारे नेता को बीच में आके इन मसलों पर हमसे बात करनी चाहिए। मुझे याद है, मैं 71 में बहुत छोटा था, इंदिरा जी ने सारे बड़े नेताओं से पहले बात की थी, और उसके बाद अटल जी ने, मुझे एक दिन सोनिया जी ने बताया था कि अटल जी ने उस पर जब कारगिल हुआ था तो उनसे बात की थी। ये एक सिर्फ शिष्टाचार की बात नहीं होती है, ये देश को कॉन्फिडेंस लेने की बात होती है। पर मैं आशा करूंगा कि आज बताएंगे। देखिए, एक और कारण है प्रधानमंत्री के आने का, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि ये सारी स्थिति यहाँ रुक गई है। अगर जो मुझे लगता है, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ रक्षा का, कि कुछ पाकिस्तान अपनी तरफ से रिटेलिएट करेगा, उनको भी अपनी लोगों से जो उछल कूद रहे हैं
कि पाकिस्तान इंडिया को मारना, इंडिया को मारना, वो कुछ छोटी मोटी कार्रवाई करेगा, कर लेगा। अगर तो एक इस हद तक नहीं जाता है कि एस्केलेट हो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं बहुत ज़्यादा वो दुस्साहस करता है और एस्केलेट होती है लड़ाई, तो फिर ऑपरेशन के भी राज्य हैं, ऑपरेशन के भी नेता हैं, लोग उनमें भी भरोसा रखते हैं। सबको एकजुट होकर आगे के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और इसलिए अगर एकजुटता दिखती और टॉप लीडरशिप से मैसेज जाता तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता। So how do you see the government has called the all party meeting today? Leader of opposition in Rajya Sabha and Lok Sabha from the Congress party, both are going, and your party is demanding that it will be good if PM attends the meeting. I think it's very important that the Prime Minister does. See, in all national issues, and especially times of national crisis, which is what today is, the Prime Minister is our leader. Right? He may belong to any political party, but Prime Minister in these regions is a leader. I remember in 17 war, Mrs. Gandhi spoke to all the opposition leaders. Even in other some critical instances. I remember Mrs. Gandhi, once I was chatting with her and she was telling me that during Kargil war, the Prime Minister, Mr. Vajpayee, had called her. It's not that you take them onto decision making, but you have to bring people into confidence, because this nation belongs to all of us, right? You are in power today, somebody else will be in power tomorrow. We have to give a sense of unity. And I would feel that I'm disappointed that the Prime Minister is not going. It's his decision. This is not a time to pick holes in that, but it would have been better if he had come. Second important point is that, look, this situation is not going to stop here, right? Pakistan is going to retaliate. I'm not a defense expert, so I can't really pinpoint what they would do, but perhaps they would do something so that it satisfies this war lust of the Pakistanis back home, especially their TV channels, etc. If it is to a certain extent that war does not escalate beyond a while, fair enough. But suppose it does, we will have to prepare the nation and everybody for it. And that happens as much politically as it is done administratively. Right? And when you want to prepare a nation politically, you have to involve the political leadership. People may or may not discount political leadership, but it is important. People trust them. And I think if that kind of a unity would have been shown and the Prime Minister would have directly addressed these leaders, taken them into confidence, perhaps it would have been a better measure. So my last question to you, how do you see the Pakistani army is retaliating along the LOC? Oh, that's most unfortunate. I mean, this is just no way. This is absolutely pathetic. It shows the complete moral degeneration of the Pakistanis. You don't attack civilians. As simple as that. And it shows how cowardice Pakistan is. What did they do in Pahalgam? Attack civilians. What are they doing now? Attacking civilians. You don't have the guts to attack uniformed forces. You don't have the himmat to touch our uniformed forces. So all that you're doing is this. I mean, this is absolutely pathetic. There are sometimes cross-border firing happens. Cross-border artillery use also happens. Okay. In that, if by a great tragedy some civilian dies on either side of the border, it's a tragedy. But you don't do it deliberately. Obviously, if you're attacking a town, like you said, Pathankot or Poonch, especially Poonch, obviously civilians will die. Poonch is not an army headquarter. Poonch is not a government headquarter. It's where civilians, Indian citizens, normal, innocent citizens live, human beings live. If you're attacking that, I think it's a crime against humanity. And our defense minister has said that our army, while operations Sindoor take this in account, that only the terror camps were targeted, not the civilians. Yeah, that is what we've been saying. They were very carefully selected targets. Most of them are known. Many people knew that Bahawalpur or some of the other areas house the headquarters of Lashkar-e-Toiba or Jaish-e-Mohammed or the few others there are. They were known launching pads. So we've targeted specifically those areas. And I'm quite sure even the West knows that. They know where the terror camps or launching pads or whatever is the terminology that experts in this use for them. I'm not going to get into that. But we have attacked specifically only those areas from where attacks into India are planned and coordinated. In that sense, we actually only did a war against those who are doing a war against us. We did nothing else. And sir, how do you see the international players like Israel is in the support of India? They are saying that India has a full right to do this in the self-defense. And the US is also saying that Donald Trump is saying that yes,
India has done it's a tit for tat what the Pakistani did, and India has retaliated. Well, I think most nations have done that. Most nations have done that. They knew that India will have to retaliate. India will retaliate. India must retaliate. I don't think any country in the world took that right away from us. Okay. I think now nations would be probably, rightfully concerned that Pakistan does not overreact and act stupidly and do something from where, it goes to a point of no return. So I think I would request all major international countries talk to Pakistan. They live on your doles. They live on your money. They live on your arms and armaments. I think you should now tell Pakistan that enough is enough. You damaged India. You got it back right, good and proper. It was a right of India to give it back to you right, good and proper. Our NSA, I don't know whether it's a true information or apparently the NSA has said that we don't want any escalation. This is the last we have done. And maybe he's spoken to the Pakistani counterpart. As I said, I don't know whether these are confirmed reports or not. He has spoken to the US, I think the US and NSA, and he has said that if we will retaliate if Pakistan do something. Yeah, but so that means we will not do anything more. I mean, that's I said, since I don't know what the information is. So that means we made it a point that this is all that we wanted to do. So I think it's high time that these nations speak to the Pakistanis and tell them to hold themselves and get back to normal. They did some mischief. They've been doing some mischief. They've been rightfully punished for that, and it should be left at that.